हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे डॉन एट पुरी बाय जयंत महापात्रा। एंडलेस क्रो noises. A skull in the holy sands tilts its empty country towards hunger. White-clad, widowed women, past the centers of their lives, are waiting to enter the great temple. Their austere eyes stare like those caught in a net, hanging by the dawn's shining strands of faith. The pale, early light catches, ruined, leprous shells leaning against one another. A mass of crouched faces without names, and suddenly breaks out of my height into the smoky blaze of a sullen, solitary pyre that fills my aging mother. Her last wish to be cremated here, twisting uncertainly like light on the shifting stands. ओके ना इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसको समझते हैं इसमें क्या है. सो ये जो पोएम है ये जयंत महापात्रा ने लिखी है और इसमें जस्ट वेट. ओके, डॉन एट पुरी. दिस पोएम फ्रॉम अ रेन ऑफ राइट्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसमें से ली गई है. इज़ इन मैनी वेज टिपिकल ऑफ महापात्रा. इट इज़ सेट इन उड़ीसा in the holy city of Puri. In Puri, there is a stretch of beach called Swargdwar or gateway to heaven, where the dead are cremated. Many pious Hindus consider it auspicious to die in Puri. Of course, Puri is famous not only as one of the four dhams or sacred cities, but also for the mutt or monastery established there by the Shankaracharya. Puri is presided over by Lord Jagannath, a form of Vishnu. The poem is 18 lines long, made up of 6 stanzas of 3 lines each. Most of the sentences are purely descriptive, but notice how the mood builds up gradually. The first line simply says, endless crow noises. It is not even a sentence, just a phrase. पूरी सेंस नहीं बनती है ना इससे, ये फ्रेज है. इट इज़ द सेकेंड सेंटेंस. इट्स द सेकेंड सेंटेंस हाउएवर विच बाइट्स, जो कि बहुत ही तीखा लगता है. वो क्या है? अ स्कल ऑन द होली सैंड्स tilts its empty country towards hunger. The skull in question, जो स्कल की बात की गई है, could be that of an unburnt corpse. अधजला जो शरीर होता है उसकी बात की गई है. But to the poet's eye, it suggests the hunger of an entire country. The images are neutral. They are quite critical and negative. There are widows in white past their primes. मतलब किस तरह की इमेजेस है. कहीं अध जला सर है, कहीं पे विडोज़ खड़ी हैं ना वाइट कपड़ों में. There are widows in white past their primes, waiting to enter the great temple. Notice how their eyes are caught in a net. They are trapped by faith. Not a very happy position to be in. The shells on the sand are ruined, leprous, again suggesting decay and disease. A whole tradition and way or life lies like a mass of crouched faces without names. Anonymity, loss of identity, facelessness, death, such are the ideas that the poem invokes. ये सब चीज़ें ये पोएम में बताई गई हैं. ये आइडियाज़ हमें इस पोएम को पढ़कर आते हैं. The next images are that of a blazing funeral pyre, which is swollen and solitary. It's the speaker's dead mother being consigned to flames because it was her last wish to be cremated here. The poem ends on an uncertain note, like the corpse
of his dead mother, twisting uncertainly like high on the shifting sands. Now we will notice how the poem invades a direct stand on what it describes. Evades. This is typical of Mahapatra, Jayant Mahapatra. His own position is never stated clearly. Means इस पोएम में सीधा सीधा कुछ नहीं बताया गया है. तो इसमें बोला गया है जो पोइट की अपनी पोजीशन है, ही इज़ नेवर स्टेटेड क्लियरली बट emerges from the manner in which he describes the events and incidents in his poems. उनकी poems में जो incidents हुए थे या events हुए थे उन्हीं से उनकी image बनी थी. Here it is clear that there is a strong sense of disapproval which is the undercurrent of the poem. Poem में हर जगह एक sense of disapproval है. The social critique is unmistakable when we go back to the title Dawn at Puri. Means पुरी जो है ना बहुत पवित्र स्थान है, लेकिन वहाँ पे डॉन है, डस्क टू डॉन. डॉन मतलब सांझ हो रही है वहाँ पे. द टाइटल डजंट से अ डॉन एट पुरी, अ डॉन एट पुरी नहीं बोल रहे हैं वो. अ डॉन एट पुरी तो अगर मतलब मान लो पोएट अपनी मदर को क्रीमेट करने के लिए वहाँ गए हैं और तब आएगा अ डॉन एट पुरी, मतलब उन्होंने एक ही मौत की बात की, अपनी मदर की क्रीमेशन की बात की, लेकिन पोएम का नाम है डॉन एट पुरी. मतलब वहाँ कई लोग जलते हैं, सांझ होती है तो कई लोगों को जलाया जाता है. तो ये है द टाइटल डजंट से अ डॉन एट पुरी, दैट इज इट डजंट रेफर टू वन पर्टिकुलर डॉन विच माइट हैव बीन पर्टिकुलरली अनप्लेजेंट. कोई एक ऐसा डॉन की बात नहीं की गई है, एक ऐसी सांझ की बात नहीं की गई है जो कि अनप्लेजेंट है, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही है. आफ्टर ऑल वंस मदर इज़ नॉट क्रीमेटेड एवरी डे, है ना, हर दिन थोड़े ना माँ को जलाया जाता है. बट रादर देन मेक दिस डॉन स्पेशल, द पोएट डज द ऑपोजिट, सजेस्टिंग दैट ऑल डॉन्स एट पुरी आर मोर और लेस लाइक दिस. ऐसे ही हैं जितने भी सांझे वहाँ पर हैं, जितने भी शामें वहाँ पर हैं, वो ऐसी ही हैं. With dead mothers being burnt on the sand, widows in white being herded into the old temple. Widows को जो है old temple में इकट्ठा कर दिया जाता है. And empty skulls, है ना, कई dead bodies जली नहीं होती ना अच्छे से. The empty skulls tilting their empty eyes towards the sky. ना कितने अच्छे से बताया कि जो एम्प्टी आपकी स्कल्स हैं उनमें जो आंखें हैं वो ऊपर की तरफ देख रही हैं. सिग्निफाइंग द हंगर ऑफ होल कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट की हंगर की बात को मतलब सिग्निफाई कर रही हैं, वो बता रही हैं. द पोएम इज़ इन्फॉर्म्ड बाय अ डीप कंपैशन फॉर दोज हु सफ़र. तो ये जो लोग सफ़र करते हैं ना, जो लोग अपनों को जलाते हैं, जो मर रहे हैं, जो विडोज़ हैं, है ना, उनके लिए कंपैशन की बात की गई है इस पोएम में. उनके लिए दुख है कि कितने दुखी लोग वहाँ होते हैं. इट इज़ दिस कंपैशन विच गिव्स द इमेज देयर बाइट, द सेंस ऑफ आउटरीच एंड एंगर. बट देयर इज़ लिटिल सिंपैथी फॉर द ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ सोसाइटी on which fringes the poet stands. देखो ना, सिंपैथी भी है ना, लोगों के प्रति कंपैशन है, लेकिन ये जब ये सब कुछ पोएट देख रहा है ना तो उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि यार कुछ ऐसे वीडियोस को वहाँ इकट्ठा कर दिया, कुछ ऐसी स्कल्स हैं जो कि जल नहीं रही हैं, तो वो बहुत गुस्से में भी है, लेकिन उसको साथ साथ में सिंपैथी भी है इन ट्रेडिशंस और इन प्रैक्टिसेस से. जो कुछ हो रहा है वो होना तो है ही है. The poet has no kind words to say about those who believe in the traditions and practices that he criticizes. वो इन traditions को और इन practices को जो है बोलते हैं, criticize करते हैं. वो he doesn't like all these things. इन traditions को या practices को पसंद नहीं करते हैं, है ना. So poet के पास इन practices के लिए कोई kind words नहीं है. ठीक है, चलो यहाँ हमारी फिनिश होती है ये पोएम. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.